So a very good morning to our esteemed speakers, and I am Madhiha Sayyed. I'm a third year law student, and I'll be your moderator for today's panel discussion. I'll be first proceeding with a very brief introduction of the organization APNA, which was established in 2018. It is a youth-led non-profit organization operated under the Societies Act of 1860. It is renowned for its impactful work as a policy implementation NGO. APNA focuses on providing sustainable access to right-based legislation for marginalized communities in India. Proceeding with the program under which we are having a panel discussion today, it's called the Tribal Ecos in remembrance of the death anniversary of Birsa Munda. Under this, for today's panel discussion, we are having our topic, which is very interesting. It's called the Broken Dreams and Empty Wallets, the true cost of unplanned international studies. This webinar serves as a crucial warning to students who are considering higher education abroad without adequate preparation. We will delve into the real and often harsh realities that unprepared students face when they venture into foreign academic environments. With us, we have our panelists. I'll be giving a brief introduction of our esteemed speakers today. First, we are having Hercules Munda. He is an advocate for indigenous language and cultures. Hercules Munda blends his engineering background with a passion for linguistics, currently pursuing his second master's degree at the University of Edinburgh. He also serves as the vice president of Duolingo Student Advisory Group. So we are extremely honored to have you today. So can you please give us a very insightful piece of your journey, like how you came to Edinburgh and everything? Good. First of all, very thank you for the introduction. It seems like I am a lot, but to be honest, I'm just a regular guy, like someone who is who is sitting in the village and comes from a very humble background. So I hope English and Hindi would be a good mix. Uh, so like I come from a indigenous community और जो जैसे इंडिया में बोलते हैं ट्राइबल कम्युनिटी सो आई एम फ्रॉम द मुंडा कम्युनिटी मुंडा ट्राइब झारखंड में ही पला बड़ा लाइफ के पहले 20 साल तक झारखंड में रहा and if you ask me 5 years back that if whether I'm planning for a international education, the answer would be a no. For me, the need for a international education came because of the failure of Indian education system, which was I wanted to study linguistic in order to save my own mother tongue, which is Mundari, and sadly. In order to get into the good institutes, आपको competitive exams देने पड़ते हैं, and at the same time, there's a lack of flexibility for exam in terms of the courses that you study. सो इसलिए मेरे को किसी ने फिर बोला कि मैं भटकते भटकते मैं एक सर्कल में पहुंच गया जहां लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया कि मैं इंटरनेशनल एजुकेशन की तरफ देखूं एंड फिर तब से मेरा शुरुआत हुआ बोल सकते हो कि इंटरनेशनल एजुकेशन इट टुक मी अराउंड 2 years टू फाइनली गेट इनटू इट बिकॉज फर्स्ट ईयर मैंने अप्लाई किया एंड उसके बाद बाय द टाइम आई अप्लाइड क्योंकि पता नहीं रहता है तो मेरे को एडमिशन ऑफर मिल गया लेकिन फीस नहीं थी तो फिर मेरे को वेट करना पड़ा 1 साल फिर सेकेंड ईयर मैंने फीस के लिए वेट किया फीस के लिए सिक्योर किया स्कॉलरशिप एंड तब जाके फिर मैं इधर आया और एज ऑफ नाउ आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जिन्होंने they have launched a scholarship. Me and my other panelist Pritam, we both are recipient of the scholarship. जिसके साथ एंड इट्स नॉट ओनली फॉर लाइक आदिवासी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है दिस इज आल्सो फॉर एससी ओबीसी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टूडेंट्स सो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो झारखंड गवर्नमेंट ने किया है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम फॉर like for enabling this opportunity for me. I'll speak more about my experience in later on. Sure, sir, sure. It's really nice to hear that. Thank you so much. With us, we are having our second panelist, Mr. Kumar Preetam Puri. He is the founder of Gramin Bharati Seva Sansthan and the Maki Munda Indigenous Studies Society at SOAS.
Pritam Kumar Puri is a dedicated advocate for Adivasi and indigenous tribal rights, currently pursuing for an MSc degree in migration, mobility, and development at SOS. So, thank you so much for joining us today. So, can you please give a brief introduction yourself as well? Thank you so much for your warm introduction and welcome. It's a pleasure to be here as a guest, and I would like to, start from what my journey was about to begin when I started studying this tribal studies. So I thought of going into medical stream, but then suddenly I changed my mind and got admitted in agriculture, rural, and tribal development, and that is then how I associate myself with all the rural livelihood initiatives taken by the government and be it other organization as well. So from then, the idea of Gramin Bharati generates, and I, along with some of my seniors, came up with an idea that let's start an organization and let's do something. So the interest slowly and gradually increased, and then after completing my graduation, I thought of doing masters. So I was studying a very integrated course, and I thought of delving into the other domains of development so that I can get the overall idea of what social work is. So I admitted into MA development in Azim Premji University, Bangalore, and through then only I got to know that a simple person from a village can think of going out and do a study or get a degree from foreign as well. And like my engagement with a lot of diverse friends who are from all across India, they have motivated me, and through them I got to realize, no, this dream can be changed into reality. So then I started looking onto scholarships and found out that Jharkhand government has started a new initiative, and actually I can able to get one if if I work hard and do a proper planning, prepare myself well enough to be able to get this scholarship. So then again, uh, finally, I don't know how, but I got selected, and now I'm here. So it was all a very brief journey, but the process behind it was so exhausting, and I mean, you have to go through each and everything so as to be prepared mentally as well as physically too. I mean, it was very challenging, and like for any person from Jharkhand, it's not about only tribal. If I say anyone, if a simple boy wants to study abroad in a foreign university, it was very, uh, I guess it's very challenging for them in terms of economy per se, or the process itself is very vast. I mean, so let's just delve deep into what our discussion is. So I would like Yeah, you yeah, to yeah, proceed sure, further. sure. Sure. Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing with us your journey. Thank you so much for joining. I'll be proceeding with the questions. So, my first question will be that, so as Indians, we know that, especially from a middle class background, we know that when we plan to pursue any foreign degree or foreign higher education, we have to put a lot at stakes, especially when it comes to the finances part. Let's say it's finances part or our family expectations, or we can say there's a pressure to achieve something. So do you think that is it really worth it to put a lot at stake, especially the finances part, to pursue a degree from abroad? And how far does these institutions like Indian institutions and scholarships helps us to achieve that? Okay, so I would like to just start from the awareness part of it. Simply, throughout my experience so far now, I have not seen people so enthusiastic to look out for foreign degrees, and they just wanted to settle down. The youths today now are engaging themselves in preparing for the government exams,
especially what our SSCs and Jharkhand states examinations for civil services are. Uh, they do not wanted to do a foreign degree, but there are few who are excited and they wanted to really, engage themselves with a foreign degree. It's not just about getting a degree from foreign, but also about gaining the knowledge and the level of education, the international education and the standard from outside, which is currently missing in Jharkhand. If you go in any school or university, you will see the pathetic condition of the institutions all around. And like in today's time, the youths are currently getting opportunities via scholarships, which is a great medium for them to ensure that they can able to pursue their education abroad. But then again, if a person wanted to pursue their degree with a loan or per se a financial borrowing from their relative or manages their finances somehow from anywhere, it's become very, it's not right. It sounds very wrong because, getting loan is okay. Uh, Getting financial assistance is okay, but then again, it's all depend upon your level of interest and your capabilities too, that whether you will be able to fruitfully translate into a success of yours, and success has many measures attached to it, be it getting a job after completing your degree, or it can be anything. Like for me, if I say I wanted to do work, but initially when I came here, I wanted to complete my degree and then go back and serve the state by just joining my organization and working over there. So the success itself has a different meaning for different persons, and I'm extremely, very be cautious about getting loans, because it can then you will be able to uh, you can not be able to cope up, because you will be fallen into the vicious cycle of interest, and then suddenly after a certain period of time you may feel like, no, this is not worth it, and the finances that I have paid here is not worth it. I mean, I will not be able to pay, or it will be very challenging for me, because then again I have to take loan from somewhere else to just pay the interest, the compounding interest of the loan that is overstanding. So different things come in the way, and I'll definitely suggest someone, if they wanted to pursue their education, just look out for a scholarship. There are plenty of scholarships available for Indian students. Our first panelist, that is Hercules G, he has gotten two scholarships. One is Felix, and another is MGOS. So there are, several scholarship, like a Commonwealth scholarship, Commonwealth shared scholarship, and other international scholarship given by the UK government, as well as there are various institutional level scholarships available too for the students of India who wanted to join here in UK for studies. Some of the scholarship I can name them are Charles Wells and British Council, Felix, Erasmus Mundus, and there are the list is long on. So if someone wants to get admitted into an institution, they can also look out for the particular institution's scholarship, so that they can get some relief in terms of finances. And various NGOs as well as international organizations also sponsor these students, but you have to be a bright mind. Yeah. Mhm. So that is what the problem is, I guess, because people in India, like students like us, like me especially, we are unaware of such scholarships and everything. And I don't know, I've heard about the Jharkhand government. They are doing very nice that you, like people like you, have already gotten there. But we as people, we as students are most of the time unaware. And yes, it is definitely correct that we most of the time prefer going into government services rather than going for higher studies in abroad. So, if we look into the success rate of studying abroad and getting a degree from there, and then if we look to the finances part that we have invested, so is there any nexus between that? Like, if let's say I want to pursue a career,
I want to pursue my master's degree, that is LLM, from some abroad university. I'm pursuing that. But the success rate of that thing, like if I want to pursue litigation in India, so there will be no use of that. But still people do that. So is there, do you want to add any key point over that? Like the success rate of pursuing a degree from there, and then the finances which we put into that degree. Yeah. So Right. I guess like Hercules, you Yeah, wanted yes, to yes, please add Yes. address something. this? Okay. Yeah. So I also wanted to add something जो पिछले सवाल का था. So like the first thing I would say is to answer your question about the expectation. Um, so until recently मतलब कुछ साल पहले तक जहाँ से जैसे मैं आता हूँ झारखंड हो गया या फिर आई कैन से दिस फॉर छत्तीसगढ़ एमपी एंड जो बोलेंगे जो इंडिया के बॉटम 5 स्टेट्स है जैसे झारखंड इज टॉप बॉटम थर्ड है फिर उड़ीसा है छत्तीसगढ़ है तो ये सब जो यू कैन से जो मेनली सेंट्रल बेल्ट जो है जो कि बहुत ही अंडर डेवलप्ड स्टेट्स है वहाँ पे अभी भी इंटरनेशनल एजुकेशन को लोग एक नॉर्मल नहीं देखते हैं तो वहाँ का नॉर्म मतलब वहाँ पे लोग अगर आप कभी किसी को बोलोगे कि मेरे को बाहर पढ़ने का है तो द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द फैमिली वुड बी कि पागल हो गया है क्योंकि पेरेंट्स को भी वो उम्मीद नहीं रहता है वो और वो अपने फोर फादर्स के जनरेशन में किन्हीं को नहीं देखे हुए रहते हैं कि जो बाहर पड़ा हुआ रहता है और जो प्री कंसेप्ट नोशन रहता है जो बना हुआ है कि जो बाहर जाते हैं वो सिर्फ अमीर के बच्चे जाते हैं जिनके पास पैसा है जिनके पास संपत्ति है बट ऑफ लेटली क्या हुआ है झारखंड गवर्नमेंट अगेन इज अ वेरी गुड एग्जांपल जिन्होंने दे हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव ऑफ सेंडिंग बच्चों को जो कि मतलब दे माइट बी इवन फर्स्ट टाइम जो अपने खानदान में पहली बार पढ़ रहे होंगे दे माइट बी द फर्स्ट जनरेशन लर्नर और अगर इफ दे आर नॉट बट देन दे वुड बी द फर्स्ट वन फ्रॉम द फैमिली गोइंग अब्रॉड तो ये हुआ है ऑल्दो देयर आर certain schemes that are there but क्या होता है कि again the whole effect of coming from the third least developed state or like bottom least developed states में क्या होता है कि आपका अवेयरनेस नहीं रहती है आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता है आपका सोशल सर्कल भी उन्हीं लोगों के साथ घिरा हुआ रहता है who share the same mindset toward गवर्नमेंट जॉब दे हैव द सेम एस्पिरेशन तो आपको कोई मोटिवेशन नहीं रहता यू डोंट हैव एनी लाइक सर्कल यू डोंट हैव एनी मोटिवेशन और ना कोई इंस्पायर करने वाला रहता है कि आप बाहर जाके पढ़ो ऑल्दो हाँ देर आर लॉट ऑफ दिस स्कॉलरशिप्स जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस देती है जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस सपोर्ट करती है या फिर इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या फिर आपको इंटरनेशनल गवर्नमेंट मतलब यूके गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है जो कि लेकिन लोगों को क्योंकि मोटिवेशन नहीं है तो फिर वो लोग कुछ सोचते भी नहीं है और इसलिए मतलब स्टूडेंट्स अनअवेयर रहते हैं उनको कोई उनके ऊपर कोई सोचते ही नहीं है ऐसे पढ़ने का अगर उनमें से कोई सोच लिया कि चलो पढ़ना है तो बिकॉज फर्स्ट इज इवन हाउ टू स्टार्ट विद द एडमिशन प्रोसेस सैडली मतलब आप देखोगे दिल्ली वगैरह में क्या है ना कि आपको एजुकेशन कंसल्टेंट नाम का एक तरह का मार्केट बना हुआ है जो कि आपको गाइड करता है पढ़ाई के लिए या आपको ये बताएगा कौन सा कोर्स लेना है कौन सा कॉलेज जाना है आप बेस्ड ऑन आपका जो रिक्वायरमेंट है वो बता देगा लेकिन छोटे शहरों में ना ये नहीं होता है कि वहाँ इस टाइप की कोई फैसिलिटी नहीं होती है तो स्टूडेंट्स को जो भी करना होता है खुद से डिसाइड करना होता है एंड इट्स अगेन आप या तो किसी से बात कर रहे हो या फिर आप कहीं यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो और आप एक एस्टिमेटेड गेस लेते हो आपको कोई प्रोफेशनल सपोर्ट नहीं मिलता है जो जिनको अच्छे से पता हो कि आपके लिए क्या बेस्ट है तो आप जो भी गेस करते हो अपने अपने जो लिमिटेड नॉलेज है उसके ऊपर आप गट फीलिंग के साथ गेस करते हो और आप फिर पढ़ने जाते हो बाहर और जो इसमें क्या होता है कि आप चलो आप एडमिशन ले लिए लेकिन फिर आता है फाइनेंस की बात लोन तो बहुत लोगों के पास पहले अगेन इसमें क्या होता है कि जब भी लोन आता है बाहर पढ़ने का एक खर्च आपको बता देना 30 से 40 लाख के है मतलब एटलीस्ट यूके में आप मास्टर्स करने जाओगे तो 20 मान लो 20 लाख के आसपास आपका फीस हो गया 10 लाख आपको रहने का एक्सपेंसेस हो गया और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए एंड फॉर अ लाइक
जो बिलो मिडिल क्लास है उनके लिए तो ये लाइफ टाइम का सेविंग होता है कि पेरेंट्स रिटायरमेंट के बाद उनको ये मिलता है जिससे वो घर बनाते हैं। एंड ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अब नॉट मेनी डेयर टू टेक दिस एज अ कोलैटरल, और उनमें से जो ले भी लेते हैं तो उनके पास हमेशा उनके बैक ऑफ माइंड में टेंशन बना हुआ रहता है कि मेरे को लोन चुकता करना है। एंड नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन विच इज द कनेक्शन बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी। तो बिकॉज आप बाहर में आओगे तो बाहर में आपको मान लीजिए जो सब्जेक्ट्स जैसे लोग पढ़ते हैं तो अगेन आप जहाँ से हो उसमें आपका सब्जेक्ट बहुत अफेक्ट करता है। आप मान ली अगर आप गांव से हो तो आप मतलब आप देखोगे कि आप आईएएस बनने का सपना रखते हो तो आप मोस्टली सोशल साइंस पॉल साइंस लेते हो। कोई प्योर साइंस नहीं लेता है, कोई फिजिक्स नहीं पढ़ता है, कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ता है। वेरेस अगर थोड़ा से आप अच्छा इंटरेस्ट हो तो उनमें से कुछ लोग रहेंगे जो कि कॉमर्स ले लेंगे, और बहुत ही कम लोग रहेंगे जो साइंस को परस्यू करेंगे आइदर थ्रू प्योर साइंस और इंजीनियरिंग। और वो भी फिर अगेन क्वालिटी एजुकेशन की भी बात आ जाती है। एंड मतलब ओवरऑल द थिंग इज बिकॉज एजुकेशन अपने आप में ना डिफिकल्ट हो जाता है, यू नो दैट लाइक जैसे एक स्टैट्स है कि आउट ऑफ द करेंट लिटरेसी रेट अमंग्स एटलीस्ट ट्राइबल क्या है 6% का है। तो जितने लोग बचते हैं वो 6% ही बचते हैं जो 100 में से ग्रेजुएशन कर पाते हैं। और फिर वो तो इनके क्या होता है कि माय पॉइंट इज कि बाहर में मतलब जो स्टूडेंट्स रहते हैं आते हैं ऐसे रूरल बैकग्राउंड से, वो लोग मोस्टली दे टेक सोशल साइंस और subjects which are not directly related to the demand of the market। अ, वो होता है जैसे करंट डिमांड क्या है कि आपको फाइनेंस अच्छा माना जाता है। यूके भी लंदन बीइंग द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो आप अगर आप फाइनेंस से हो तो आपके लिए इट्स अ हेवन। बट नॉट मेनी पीपल स्टडी फाइनेंस। नेक्स्ट इज अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है तो आपको मतलब देर आर नॉट मेनी गुड इंस्टीट्यूट्स इन द रूरल एरिया जो कि आपको अच्छा कंप्यूटर साइंस के ऊपर बताए। इनफैक्ट द होल इंडियन इंजीनियरिंग सेक्शन में ही उतने अच्छे इंजीनियर्स नहीं है, तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाता है। एंड सो अल्टीमेटली क्या होता है कि अब जब आप पढ़ आ रहे हो एंड यू आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर टू फाइंड अ जॉब, ऑलरेडी जॉब मार्केट में सैचुरेटेड है, आपको एम्प्लॉयबिलिटी नहीं रहती है क्योंकि आपका सब्जेक्ट्स का डिमांड नहीं है। एंड दिस इन अ वे माइट गिव यू टेक यू इनटू वेरी नेगेटिव डाउनहिल कि आप ऑल ऑफ अ सडन आप मतलब डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। एंड मतलब खुदा ना खास्ता कि वो होता है कि अगर आप बाई चांस इफ यू सोचते हो कि आप अपना कोर्स छोड़ दे तो देन यू द 30 लाख जो आपने लोन लिया है उसको आप यू आर लाइक यू गेट ट्रैप्ड इनटू दैट विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है कि उसको कैसे चुकता करे। एंड माइंड इट लाइक दैट 30 लाख इज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर आवर पेरेंट्स जनरेशन, जो कि इट्स अ लाइफ टाइम ऑफ देयर सेविंग जो उन्होंने 30 साल में कमाया है। तो यू डोंट नो हाउ टू रीपे इट। Definitely, sir. I agree to this. There's also one more thing, sir. Like, आजकल लोग क्या करते हैं? They just want a foreign degree. They just want it for the sake of CV, let's say. कि there should be a written, there should be something, some kind of degree in their CV from any prominent abroad university. So, sir, my question is that what are the some most common repercussions that students face when they choose courses without understanding their relevance to the job market, and like how can students actually ensure that they are academically prepared for studying abroad? Pritam, sir, do you want to Yeah, address this? yeah, sure, sure. Thank So, actually, the problem with us is, as like what Hercules said, there are very choosy streams available for students of Jharkhand. Basically, they wanted to get themselves into preparing for IAS, or whether if you go around in small towns, you will find students pursuing, when preparing for NEET and JEE mains for engineering, either for medical. And the scope for diverging themselves into the various other domains of studies
which if I say in social science, there are thousands of courses available. If you again go to TIS website, which is Asia's, the first social science institute, if you go into their website, you will see 200 plus courses available just for social sciences. And the the number increases when you look out for courses in UK. So every institute has its own uniqueness, and their courses are standing out. They are just spreading their courses across through various social media platforms. They are marketing it, and students from all over the globe are applying for it. But then, what is the job scope after completing the course, and what is the employability, and how is the market? Is the market ready for you or not? And is it like sustainable uh, for example, there is a demand in the market for AI at a current moment, but then again after 5 years what will happen? Will the market still be demanding people who are from AI background to join in? So this is a case and a problem too when we see the various diverse courses across various institutions in UK or in anywhere around the world. People just wanted to add a foreign degree into their CV and just lure the the HRs or Big companies and the everything. Yes. big companies, you can say. So Yeah. the problem here is you don't do a proper research whether you wanted to complete a degree and where you wanted to see yourself after completion. In my case, if I say I have a complete development studies background, but then again, currently I am pursuing migration. If you understand the migration metrics, around 48% of the people move out from Jharkhand. It's an out migration, and this happens because they wanted to go and search for a better livelihood in other cities, in major cities. Okay. And the second number, the second migration rate is of youths, which are migrating for education. And they are migrating all across India just to get a decent education, which is not available in Jharkhand. So, understanding this migration metrics itself made me think that why is this happening? And if I pursue my migration, then I have some prospects of working either in my country or with international organizations like ILO, IOM, or other UN organizations. So this was my thinking, and I did a proper research. The two institutes that I applied was in Sussex, and the second is in SOAS, and these two ranks one and two in development studies. So you have to do a proper research. You just can't blindly apply for courses and just add on the degree to your CV. This will not going to happen, because even if I do degree in top colleges or top universities, my chances of getting into a job, a proper decent job that I was looking for is not guaranteed. Also. Yes. Exactly. Mm. And adding on, I mean, the other thing is, Indian student mindset is like we somehow also connect education to employability, and uh, which is nice in one way, but it can also be very fatal. Like, mm, जैसे यहाँ पे क्या होता है ना कि लोग कोई डिग्री कंप्लीट कर लिए तो उनको लगता है कि उस डिग्री से आपको डिग्री से वो डिग्री कंप्लीट करने का मतलब है कि आप जॉब मिल रहा है, रादर देन आप वो नहीं सोचते हो कि हम इस डिग्री से कैसे जॉब ले सकते हैं या हम इसको कैसे अप्लाई कर पाते हैं। तो because for me it was a very big decision to change from IT, जो कि current demand है, to move into social science. I got into linguistic, and it, क्या हुआ कि because for me I knew about कि मेरे को क्या करना है, and I by that time I realized कि आपको आपका मतलब जो इंडिया में, क्योंकि देयर सम लाइक फॉर एग्जांपल द डिफरेंस हियर इज, इंडिया में आपको कैंपस होते हैं, कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं। तो लोगों का माइंड में क्या है कि आप वहां पे पढ़ाई करो, उसके बाद उस कॉलेज में कैंपस कंपनी आएगी और आपको फिर नौकरी लग जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा कोई फंडा नहीं है। यहाँ पे बाहर में आप देखोगे कि आप जो पढ़े हो और उसको फिर आप किसी भी फील्ड में आप कैसे अप्लाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर
पढ़ा है इंजीनियर या कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, वो जाके बैंक में भी तो कंप्यूटर की जरूरत होती है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं। या फिर आप एक हॉस्पिटल में भी जरूरत होता है कंप्यूटर, वहां पे आजकल सब IT मतलब कंप्यूटराइज हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर बनाना उनके लिए। और ये तो मेरा पॉइंट ये है कि आप भले ही कंप्यूटर पढ़े हो, लेकिन आप उसको एक फाइनेंस के सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हो, एक मेडिकल के सेक्टर में भी अप्लाई कर पाते हो। ये चीज, ये मार्केट में मतलब ये डाइवर्सिटी है। बट ये इंडिया पे हम ऐसे नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि अच्छा, कंप्यूटर पढ़े हैं मतलब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, कोई वेबसाइट बनाएंगे, कोई ऐप बनाएंगे। और इस कारण से लोगों का जो माइंडसेट बहुत लिमिटेड हो जाता है, और इस कारण से फिर वो कभी सोच नहीं पाते हैं कि मतलब ये ऑप्शंस भी है, मतलब अच्छा ये भी होता है, हमको तो पता ही नहीं था। ये सुनने को आपको बहुत मिलेगा। अब सो कमिंग टू योर, मतलब टू आंसर योर क्वेश्चन कि अ, लोगों को जो कोर्स से रिलेट करते हैं, एंड फिर मार्केट जॉब एम्प्लॉयबिलिटी में कैसे होता है, तो अब आई कॉन्ट्रडिक्ट माई सेल्फ, विच इज जो मैंने पिछली बार बोला कि भले ही यहाँ पे देर इज लाइक लोग जो आते हैं सोशल बैकग्राउंड से, और उनको दे डोंट थिंक अबाउट, द थिंग इज दे डोंट थिंक अबाउट मार्केट एम्प्लॉयबिलिटी। भले भले ही मार्केट नहीं है, बट दे कैन, अगर उनको पता है कि इफ दे हैव डन वेल रिसर्च, एंड when you look at things differently in the sense कि आप सिर्फ पढ़ाई करके आप डिग्री कंप्लीट किया और आप कंपनी आ रही है, वो मत सोचोगे, बट आप वो सोचो कि आप अपने पढ़ाई को कहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो देन यू विल बी थिंकिंग अबाउट व्हाट प्रीतम सेड, व्हिच इज गोइंग टू वर्क विद IMO और UN में काम करने का। तो क्या है, क्योंकि आप वहां पे अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे कि ठीक है, मेरे को वहां जाके काम करना है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज अबाउट माइंडसेट, कि आप इंडिया पे हमारा वो माइंडसेट रहता है कि कॉलेज में आएगा और हमें नौकरी लग जाएगी। बट यहाँ पे जब आते हो तो आपको तब वो बहुत शौक लगता है कि अच्छा, हम तो सोचे थे कि अच्छे कॉलेज में आएंगे पढ़ने के लिए और फिर हम कंपनी आएगी और हमें ले जाएगी। बट हियर द थिंग इज कि आप जितने भी अच्छे पढ़े हो, उसके बाद आपको खुद से नौकरी खोजनी पड़ती है। यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ। That's a very important thing. And yeah. So, like my follow-up question is this: ki, like for considering a degree, like what things a student should consider before choosing a particular degree? कि मतलब क्या चीजें कैसे स्ट्रैटेजी प्रिपेयर की जाए टू चूज इट. Right. I think I'll go ahead with it. हाँ, So, श्योर श्योर. mm, I'll share my personal experience. So the first thing was about like हर कोई फाइनेंस सोचता है, पैसे कहाँ से आएंगे। तो मेरे लिए एक बहुत क्लैरिटी था कि uh, अगर 30 लाख की बात है तो आई ओनली अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो उस 30 लाख से हम अपना दुकान खोल लेंगे और हम कुछ कर लेंगे। बट आई एम नॉट रेडी टू रिस्क 30 लाख, बिकॉज आई नो कि मेरे को जो सब्जेक्ट पढ़ना है, कोर्स पढ़ना है, उस पर एम्प्लॉयबिलिटी उतने यूके मार्केट में नहीं है। मोर ओवर, अगर हम इंडिया वापस आना चाहे, और विच आई रियली वांट टू डू, विच इज टू कम बैक, एंड मैं झारखंड में ही काम करना चाहते हैं, तो भी अगर लोन लेंगे तो आई नॉट बी एबल टू रिपे द अमाउंट वर्किंग इन झारखंड। तो व्हाट आई रियलाइज्ड कि लाइक द फाइनेंस एंड लाइक एम्प्लॉयबिलिटी एस्पेक्ट में वो था कि अगर हम लोन लेते हैं तो हम काम करके उसको रिपे नहीं कर पाएंगे एट एनी कॉस्ट। सो दैट वाज द सो फाइनेंस बिकम्स अ फर्स्ट कंसिडरेशन। एंड नॉट टू डिस्करेज बट एनीवन, मतलब हर किसी को मेरा सुझाव ये रहेगा कि लुक अबाउट कि आप जहां भी काम करो, यूके में काम करो, इंडिया में काम करो, बट थिंक अबाउट रीपेमेंट। अगर आप लोन ले रहे हो, या फिर अपने मतलब एनी फॉर्म ऑफ लोन दैट यू आर टेकिंग। so that's the first thing. The second thing is about कि आजकल जो प्रीतम ने जैसे बोला कि बहुत एक हो गया है। हाँ, ये हमारा इंडियन माइंडसेट है कि बाहर का कुछ भी है अच्छा है, तो डिग्री भी है, चाहे वो जैसे भी जगह से हो, कुछ भी हो, बस बाहर का डिग्री है तो वो अच्छा होगा। द रियलिटी इज कि अगर आप बाहर के किसी खराब कॉलेज से पढ़ो, and I say this because there are Indian colleges like Azim Premji, JNU, which are in like top 200 in the world.
और आप यूके में आपका 6,000 से ज्यादा कॉलेजेस है, तो नॉट एनी एवरीवन कैन फिट इनटू द टॉप 200 कॉलेजेस ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली है कि आपको यहाँ पे जो इन वर्ल्ड पे 1000 रैंक पे होगा वो कॉलेज भी मिलेगा, और जो कि जेएनयू एंड एम मतलब अजीम प्रेमजी से बेकार कॉलेज होगा, तो आपको वहाँ सीख नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा वो माइंडसेट है कि वो बस अच्छा बाहर का डिग्री है तो अच्छा ही Hmm. सीखा होगा, तो वो नहीं होता है। तो इसलिए always think about the college that you are going, because there are two fact दो चीजें आपको बहुत अफेक्ट करती है, या बहुत चेंज मतलब contribute to your learning, which the first is the kind of faculty that you get, the kind of place that you get. बिकॉज आप जैसे कॉलेज जाओगे वहां पे उतनी ही एडवांस रिसर्च हो रहा होगा और आपको लेटेस्ट पढ़ने को मिलेगा। द सेकेंड इज द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट दैट यू गेट। भले ही आप बाहर रह रहे हो तो हाँ, बाहर में आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको एक फ्रेंड्स इंटरनेशनल फ्रेंड सर्कल मिल जाता है, बट देन यू डोंट हैव दैट इंटेलेक्चुअल डिस्कशन। एंड सो माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज कि सिर्फ बाहर पढ़ने का शौक लेके नाम के लिए ना है, बट to really aim for like universities which are really good, which are much better than the universities in India, like प्रीतम के जैसे जो SOAS है, which is top सेकंड रैंक है वर्ल्ड में डेवलपमेंट स्टडीज के लिए। is somewhat it's the same for Edinburgh as well. तो आई वुड से कि ऑलवेज स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, क्योंकि अगर आप एक्सेलेंस के लिए और जब आप जब एम करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली देर आर दिस थिंग्स विच इज लाइक एम्प्लॉयबिलिटी एंड लर्निंग, वो या आपका जो होल एक्सपीरियंस है वो भी आपका बहुत इनहांस होगा। फॉर एग्जाम्पल आप जब रियली टफ कॉलेज मतलब टॉप कॉलेजेस में पढ़ोगे तो आपको जो सर्कल भी है वो बहुत इंटरनेशनल मिलेगा आपको। जो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो क्रीम रहेंगे, मतलब वो लोग बहुत जानकार रहेंगे, और आपको बात करने से ही एवरी एवरी कन्वर्सेशन दैट यू हैव इज अ लर्निंग सेशन फॉर यू। बट अगर आप जो इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, और आप कोई एवरेज कॉलेज गए हो और तो आपका डिस्कशन विल नॉट बी द सेम, एंड अल्टीमेटली इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द अमाउंट ऑफ लर्निंग जो आप सीखे हो, वो ज्यादा कुछ नहीं रहेगा फिर। So finance is one, the quality of education is one, and third is about the kind of peers that I want to get, and uh, then the last one is very personal. It's also about location, because जैसे मैं अभी जहाँ पे हूँ, which is not a very it's the city is mainly comprised of students and tourists, यही दो लोग हैं यहाँ पे। कोई कंपनी वगैरह उतनी बड़ी नहीं है। इट वर्क्स फाइन फॉर मी बिकॉज यहाँ का रिसर्च अच्छा है, एंड देन आफ्टर दिस आई वांट टू गो बैक टू झारखंड, सो मेरे लिए कंपनी और मतलब सिटी डजंट मैटर। बट देन अगर कोई चाहते हैं कि दे वांट टू वर्क इन यूके, तो उनके लिए वो सिटी भी बहुत मैटर कर जाता है, क्योंकि फॉर देम आफ्टर स्टडीज लाइक जब क्लासेस खत्म करते हैं वो एवरीडे लाइफ में, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होता है कि वो जो जिस कंपनी में जाना चाहते हैं, जिस संस्था में जाना चाहते हैं, वहाँ के लोगों से वो मिल पाए, समझ पाए। तो आई थिंक सिटी ऑल्सो या लोकेशन इन जनरल ऑल्सो मैटर्स to some extent. Yeah, so मतलब to repeat, first is about finance कि आपको कैसे repay करोगे, second is आपको किस type quality of education, the third is about your peers, and fourth is about the location. These are the factors जो मैंने look सोचा था आने से पहले। Yeah, adding on to it, I just like to give some suggestion. If I am a prospect student of India and wanted to get admitted into the top universities and wanted to study or pursue a degree, there are definitely some points that I can consider before, which is one is to get into the website and just thoroughly research everything. What is your degree? And what are the courses available within that degree, and within that also what are the things that you are going to study, because if I wanted to work for Asia, and my degree is all related to Middle East,
I will not be able to relate it with my career or like the job which I'll be pursuing. So these things definitely hamper some pre condition of your mindset with proper research is very helpful in order to choose a particular course or you know anything that you wanted to do. There are few websites. I don't wanted to promote them here, but there are few websites where you can just filter out what are the universities that you are looking for, what are the courses available, and accordingly filter out the other things. For example, if you wanted to get admitted in September intake, you can choose that. If there is any scholarship available within the institution, so you can also filter out that accordingly. So this helps. Also, um one more thing is just to get yourself familiarized with the professors here. Just see their profile and research out what they are doing, what they have done, and what they will be teaching you. See some videos on YouTube. It will help you get a knowledge about the topics that you are going to engage with when you will be here. So all these things matters, and then again, what Hercules said that you need to be cautious about your finances, how you are going to repay it, and where you wanted to land yourself after completion of your degree. All these things will matter too. मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आई स्लाइटली टेक वन मोर मिनट। जैसे ये है ना कि रिसर्च की बात है, तो आई माय फर्स्ट यूनिवर्सिटी वाज सवास, एंड द ओनली रीजन आई वेंट टू सवास वाज बिकॉज एट दैट टाइम आई वांटेड टू गो टू अ कॉलेज जहाँ पे लोगों को पता हो कि आदिवासी क्या है या फिर मुंडा क्या है, एंड सवास वाज द ओनली कॉलेज जहाँ पे मुंडारी रिलीजन के ऊपर रिसर्च हुआ था। सो यू नो वही है। अगर मैं लाइक इफ आई वुड हैव वेंट टू एनी अदर इंस्टीट्यूट्स जो कि, और जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेम एंड पॉपुलैरिटी, मेरे को वो सपोर्ट नहीं मिलता, बिकॉज उनको वहां पे पता ही नहीं है प्रोफेसर्स को कि क्या रिसर्च होता है या फिर क्या मेरा जो इंटरेस्ट है उनके बारे। बट सो या दैट वाज अ एग्जांपल कि टू बी वेरी कॉशियस अबाउट कि आपका जो अलाइनमेंट हो जाए, जो इंटरेस्ट है एंड वो जो एकेडमिक ऑफरिंग है, उसके बीच में अलाइनमेंट होना चाहिए। So one more prominent concern which most of the people must be having, students must be having, is related to the linguistic and cultural barrier which students face, especially जो new जाते हैं. So which most of the time results in isolation or academic struggle होता है, and the difficulty to mingle into the environment. So now how can students be best prepare themselves to overcome these challenges like barrier and cultural and everything? Like you just said that SOS may you had people know about your community, so it must be easier. But there are people जो नहीं जानते हैं, there is total different culture. So how can one mingle into that? Mm, okay, I'll answer start. Mm, सो जैसे कल्चरल शॉक की बात आती है या जो लिंग्विस्टिक बैरियर्स की बात आती है, तो ऑब्वियसली द जो, बिकॉज इंग्लिश इज सेकेंड लैंग्वेज, इंडिया में हमारे लिए सेकेंड लैंग्वेज है। सो इवन दो वी लर्न इट एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वी रियली डोंट गेट द कल्चर ऑफ इंग्लिश। एंड वो जब यहाँ पे आते हो एंड देन आपको, क्योंकि आपका क्लासरूम में क्या है कि जो एक्चुअल इंग्लिश स्पीकर्स है, जिनका इंग्लिश जिनके लिए मदर टंग है, जिनका दैट्स इट फॉर्म्स देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस, वो आप उनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होते हो, तो ऑब्वियसली द डिफरेंस जो आपको नजर में आता है। सो बट आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको मतलब इंग्लिश इज सो डिफिकल्ट कि आपको क्लासेस समझ नहीं आएगा, बिकॉज in India, also we take perceive English as a medium for instruction, and so यहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज में आप मीडियम इंस्ट्रक्शंस कर लोगे। लेकिन जब आप in order to be fully immerse in a international education, you also need to, आपको कल्चर भी एक्सपीरियंस करना पड़ता है, एंड that might come as a shock for you because you're not aware of
things that are like things in general, etiquettes, manners, and the good thing is, if you have a very good relationship with your professors, they might invite you to dinners, and आपको slowly आपको उनका मतलब आप वो स्टूडेंट बबल से निकलोगे जहाँ के आप एक्चुअल में जो इंग्लिश रहते हैं तो वो कैसे रहते हैं, आप उनको उनका लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करोगे. बट अगेन क्या होता है कि बिकॉज देर इज इन कमिंग टू द एडमिशन पार्ट देर इज सॉर्ट ऑफ क्या होता है कि स्टूडेंट्स के लिए एक रिलैक्सेशन रहता है. फॉर एग्जांपल जो इंग्लिश टेस्ट भी होता है तो उनका जो थ्रेशोल्ड होता है, अगर आप वो नहीं लाते हो तो उसमें अगर आप उसे स्लाइटली कम ला रहे हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको जो इंग्लिश टेस्ट है आपको उसमें 70% के ऊपर चाहिए स्कोर, बट अगर आप लेट्स से आप बोलते हो कि आप 60% ले आ रहे हो, ओ तो आपको क्या है तब भी यूनिवर्सिटीज ले लेती है, एंड दे इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड, आपको एक क्रैश कोर्स करना पड़ता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज का दे इन अ वे एक्सप्लॉइट दिस थिंग विच इज कि वो सोचते हैं कि ठीक है हम कुछ तो ले आए हैं एंड क्रैश कोर्स करके आई विल बी एबल टू टेक एडमिशन एंड ऑल. बट क्या होता है कि because English is a second language for us and then for others it's the first language. तो जब आपको जब वो आता है ना बात कि आप उसको अपने एग्जाम्स का बात हो या क्लासरूम डिस्कशंस का बात हो, तो आपको फिर आप यू फाइंड योर सेल्फ वेरी लिमिटेड. एंड द रीजन हियर इज लाइक इंडिया में क्या होता है कि द जनरल आइडिया बिहाइंड इवैल्यूएशंस जो भी एग्जाम्स होते हैं, तो उनका क्या रहता है कि डेफिनेशन लिखना है तो वर्ड बाय वर्ड सेम होना चाहिए, तो वो सेम है. बट यहाँ पे क्या है कि आपको अगर डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा, वो पूछेगा आप क्या समझते हो, और हर एक इंसान का समझ अपने आप में होता है. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लेगरिज्म चेक होता है जो इंडिया में काफी फेमस नहीं है, बट आपका जो आप लिखे हो वो अगला इंसान से 10% से ज्यादा सेम नहीं होना चाहिए. तो जब यहाँ पे आपका लैंग्वेज आपको बहुत अफेक्ट कर जाता है कि आप अपने आप को क्योंकि इंग्लिश आपका फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो आप अपने आप को अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हो, अपने ख्यालों को आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो. और फिर आपको यू इवन दो यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग बट आपको मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, ये चीज हो जाता है. एंड सो यस, लाइक फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इनटू एन एडमिशन, आप कॉलेज में आप तो जाओगे, आप क्रैश को मतलब इंग्लिश लो इंग्लिश कोर्स है, बट देन आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होता है जब आपको खुद को आर्टिकुलेट करना पड़ता है. एंड जब आपको एंड इट्स नॉट द नॉर्मल एवरीडे कन्वर्सेशन, आप क्लास में भी चलो मैनेज कर लोगे कि दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग एंड दिस इज व्हाट आई वेयर माय स्टैंड इज, बट जब आपके एग्जाम्स होते हैं एंड इरेस्पेक्टिव आपको सब कुछ पता है, आपने सब कुछ समझ लिया है, बट जब आप उसको जब बता लिखने जाते हो तो आपको यू हैव टू रियली थिंक ऑफ लाइक इंग्लिश एज अ फर्स्ट स्पीकर, लाइक नेटिव स्पीकर, ताकि आप अपने ख्यालों को अच्छे से कर पाओ. यू कैन नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक कि हाँ मेरा ख्याल वही है जो मतलब या दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, एंड आप वो नहीं कर सकते, तो वहां पे बहुत लिमिटेशन हो जाती है. एंड इसके कारण क्या होता है कि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाता है. सो या दैट्स व्हाई आई वुड से कि एनीवन कमिंग फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन, ये मतलब यूके आ रहे हैं, तो गेट अकस्टम टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर एजुकेशन. हम लोग इंग्लिश में सुनना हम लोग को आदत है, लेकिन हम लोग को इंग्लिश में बोलने का आदत नहीं है इंग्लिश में हम लोग को लिखने, हम लोग इंग्लिश में अपने ख्यालों को लिखने का आदत नहीं है. व्हाट वी रियली थिंक वी जस्ट नो, इंग्लिश में बस आंसर को कॉपी पेस्ट वो रट के हम लिखने का आदत है. तो ये सब चीजों के बारे भी सोचना, मतलब आई थिंक पीपल शुड रियली थिंक अबाउट इट कि हाउ गुड दे आर in expressing their thought, either verbally or in written. So Pritam, any I'll be, thoughts? No, no, like you have yes, very well summarized and touched each and every point that I wanted to yes, add yes. on. So I guess you are So all very from my beautiful top, and insights, like, yeah, yes, thank you. Sir, my next question is that, as you already said, that most of the students are not prepared with their career alignment.
when they plan to study abroad, the field of course which they want to pursue or should pursue as per the demand of the home country market. So are there any specific measures or programs that foreign institutions or the Indian institutions help students to better understand the importance of strategic course selection and career alignment while studying abroad? Or do you want to give some tips on that? I mean, yeah, but like there's a specific section of each and every institution. It's called career advice or say career department where you can go and ask them about getting your CV reviewed, uh, like the potential opportunities available in your domain, whatever you are studying. If you wanted to land on a job, definitely they will help you and will guide you for preparation of the application process, to applying to those positions wherever available. So these things really help you a lot. Apart from that, you can reach out to your professors, ask them if there is any opportunity available in the field. These things you can do. Otherwise, I would strongly suggest by using LinkedIn and all the career portals, which will help you find a proper job which is very relevant to your domain. And you can just go through the GDs so that you can scan out everything and you know the demand of the market, what the market wants you, and throughout your studies you put yourself into learning all those skills through different courses available online as well as offline too. And after getting some skills, engaging with small internships or voluntary works all across, you will get some idea about where you wanted to see yourself after completion of your degree. Uh, for strategic planning, I'll say only the career service or the career department in your institution will help you. Apart from that, all you have to do is by yourself. No one will help you or guide you. uh, you can definitely discuss this among your fellow mates who are really experienced, because each and every students here who is studying is not fresher. They have some experience of the background and they are coming from all over the globe. So engaging with a dialogue and just discussing these things with them will really help you understand the prospects of getting proper opportunity in your sector. Yes, sir, definitely, sir. I guess the main idea of planning a strategic uh, schedule is just the research part. The main thing Yeah, is that. just the research part, you prepare Yes, yourself by engaging and learning various skill sets. yes, yes. Thank you so much, sir. So, we'll be moving to the end of the discussion with Sir Achilles, sir. I would like to invite you to give us few tips to manage the finances, how to manage the finances if one is planning to study abroad. So, do you want to like add any tips or something? Sure. So, my first advice would be uh, to go for scholarships because, you know, coming from a rural part, मतलब coming from a like low weaker economic section, हमारे पास एक advantage भी है वो हमारा background is something. अगर आप scholarships के लिए apply करोगे and you clearly tell them that this is my financial condition and मतलब एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि दो तरीके के scholarship होते हैं. एक रहता है merit based scholarship and there is the other thing is called need based scholarship. तो मेरिट बेस में क्या है कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हो एंड बिकॉज यूर मेरिटी मेरे लाइक आपको मेरिट में हो आपको वो स्कॉलरशिप मिलेगा. बट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप क्या होता है, डजंट लुक इनटू आपका मार्क्स नहीं देखते हैं वो, आपको वो देखते हैं कि आपको फाइनेंशियल नीड क्या है. एंड दिस इज समथिंग दैट अगेन स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर, उनको पता नहीं रहता है कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी होता है. तो मैं बोलूंगा कि गो फॉर द नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो कि आप मतलब लुक आउट आप अपने स्टेट में देखो
नेशनल लेवल पे देखो, ये प्राइवेट लेवल पे देखो, यूके गवर्नमेंट के लेवल पे देखो, एंड लुक आउट फॉर दिस नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, so that you have the like financial support that you want to study. देन अगर मान लीजिए आपको फाइनेंस स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, एंड यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड और यू इन पोजीशन जो कि आप लोन ले सकते हो, एंड यू कैन रिस्क द कोलैटरल, देन माय एडवाइस वुड बी कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे to find a part-time job. And again, there are two categories of part-time job that you can find. The first is something into your own field as an intern or volunteer, paid volunteership, जो कि आपको मिल सकता है, but those are very limited in number. तो क्योंकि आप हमें पता नहीं रहता है, तो हमारा पूरा दिमाग वो रहता है कि हम कैसे पहुंचेंगे, बट वी डोंट प्लान कि हाँ आने के बाद क्या करेंगे। तो बी बी वेरी कॉन्शियस अबाउट कि आने के बाद क्या करोगे इन टर्म्स ऑफ वर्क, एंड टू रियली ट्राई टू गेट दोज internship opportunity in your field. Talk with professor, look out for, यहाँ पे वो लोकेशन बहुत काम आ जाता है कि अगर आप अच्छे मेजर सिटी में हो तो आपको अपने फील्ड के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाते हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो, आप यू कैन रीच टू देम आउट, सो दैट आप पार्ट टाइम आप काम पढ़ाई के साथ आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, एंड देन यू आर समहाउ एबल टू सस्टेन योरसेल्फ। अदरवाइज फिर यूजुअली लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, विच इज वर्किंग इन फूड रेस्टोरेंट्स, थिएटर, which is also a part of struggle, and it's, I won't say it's a bad experience. कुछ ना कुछ नहीं तो आपको patience, hard work, एंड एट द सेम टाइम आपको बहुत हम्बल बना देता है वो, क्योंकि इंडिया में आप बहुत शान शौकत से रहते हो, लेकिन आप यहाँ आके आप यू आर वर्किंग एज अ वेटर, एंड देन इट ऑल्सो इन मोटिवेट्स यू कि ये मेरे को जल्दी खत्म करना है, आई वांट टू रियली गेट इनटू अ मेन स्ट्रीम जॉब। सो वो चीज है। सो द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट फाइनेंस हो गया, लुकिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब अगेन। A website that I want to mention here is मतलब आप चेक कर लोगे, रैंकिंग देख लेना आप, क्यूएस रैंक होता है, एफटी रैंक होता है, कोई भी एक रैंक देख लो जो स्टैंडर्डाइज रैंक है, और वहां पे आप अपने कॉलेज को देखो, कॉलेज का जो अपने सब्जेक्ट्स का एरिया का टॉप कॉलेजेस को देखिए आप, और try to go for those top 10 colleges. Don't go for these like average colleges or below average colleges. So look out for टॉप यूनिवर्सिटीज रैंकिंग, कोई भी बहुत सारे रैंकिंग अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हो, और आप देखो कि आपको उन रैंकिंग में देखिए कि आपका कोर्स के लिए कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट है, एंड गो फॉर दोज, क्योंकि तो ये हो गया। And at last, the psychology also play a very important factor, because again, I'm assuming ये वीडियो बहुत सारे ऐसे ऑडियंसेस के लिए होगा जो कि मतलब दे वुड बी द फर्स्ट जनरेशन लर्नर, अपने फैमिली में फर्स्ट टाइम वो फॉर्मल एजुकेशन कर रहे होंगे, या फिर लेट्स से वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होंगे, या फॉर श्योर दे वुड बी द फर्स्ट वन एमिंग फॉर मतलब बाहर पढ़ने के लिए। तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि having a very, psychology also plays a very important factor, having a very like strong, being very confident, strong minded, क्योंकि आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो जो कि पहले नहीं हुआ था, एंड फॉर दैट यू रियली नीड टू ब्रेक सो मेनी नॉर्म्स, लोगों का मिसकंसेप्शन एंड प्री कंसेप्शंस और स्टीरियोटाइप को आपको तोड़ना होता है। तो इसके लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेंटल एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई आई वुड से कि बी वेरी कॉन्फिडेंट, बी वेरी पॉजिटिव अराउंड कि आपको क्या करना है। इन माय ओन केस जब मैं आया था तो पीपल, मतलब जब जिनको भी मैं बोलूँ तो आइदर आप फ्रेंड बोल देते थे कि पागल है, ज्यादा सोच रहा है। सेकंड रहेगा कि वो दे विल नॉट इनकरेज यू, नाइदर दे विल डिस्करेज यू, दे विल से हाँ हाँ ठीक है, बट दे विल यू विल फाइंड वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल जो कि आपको बोलेंगे कि मोटिवेट करेंगे कि यस यू शुड डू इट। एंड द आइडिया इज टू सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु मोटिवेट्स यू, even if they are not able to contribute in any aspect, they can, the least they can do is give you a positive environment, and so surround yourself with people who encourage you to do it, so that अगर आप अकेले भी कर रहे हो
So you have the willpower to do it. And yes, at last international education कोई मतलब बड़ा चीज नहीं है, आप देखोगे है मतलब if me and Pritam can come, हम लोग झारखंड से आते हैं, which is irrespective of your cultural background, Jharkhand is the third least developed state of India, and there is lack of quality education, teachers, infrastructure, even allowances, awareness, बहुत सारी रुकावटें हैं. Irrespective of that, it's very commendable कि प्रीतम and और भी मतलब जितने भी 25 स्टूडेंट्स हैं, and over the 3 years around 650 स्टूडेंट्स आए हैं, और उन लोगों ने सबने ये चीज को ब्रेक करके, वो स्टेरियोटाइप ब्रेक करके बाहर आए हैं पढ़ने के लिए. एंड दैट्स so if students like Pritam and all those who have been here over the past 3 years can make it, I think I'm sure anyone can make it. International student education is not a very big deal, but be very cautious about कि क्यों करना चाहते हो, and also to think about like international education the best option. अगर आप you never know कि आपको वो चीज आपको इंडिया में इससे ज्यादा अच्छा पढ़ाई हो सके. मतलब फॉर एग्जांपल इट वुड बी, फॉर जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, आप योगा पढ़ने अगर यूके आ रहे हो तो फिर इट इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज इंडिया इज द बेस्ट प्लेस टू स्टडी योगा. ऑल्दो यहाँ पे योगा पढ़ाई नहीं होता है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. सो ऑलवेज थिंक अबाउट कि आपको कहाँ से कहाँ पे अच्छे से सीखने को मौका मिलेगा. एंड यस, be positive, and yeah, to sum it all up, if I can do it, if Pritam can do it, I think anyone can do it. And at the end, uh, I would, if it's about going for it or not, I would say yes, definitely go for an international education, but have your roots, be connected to your roots, have your feet on the ground, never forget where you come from, and always try to, irrespective of where you work in India or abroad, but always try to encourage someone. Be like, आप अगर if you are successful in getting an international education, and you it had a positive effect in you, try to replicate the same effect for someone else. That's all I can say. Thank you. Thank you so much, sir. Pritam, sir, do you want to add any concluding remarks to our session? Yeah, I would definitely say keep hustling and just start preparing if you wanted to get yourself landed here in UK or anywhere. You should try out, and definitely if you can watch a reel to know how to cook something, you can definitely watch a video how to land yourself here in UK. So, after COVID-19, things have become very much easier for us in terms of technology or access to these resources online. So there are plenty of resources available where you can boost up your knowledge about any domain you wanted to. And I'm very sure there are various NGOs and other platforms which help students in preparation of the process. So basically, these are the most important thing. And like what Hercules had said, that you need to surround yourself with the people who motivates you throughout, even if they did not able to contribute in any percentage or in any manner, but their support is very vital for you. So I mean to say, just look around and plan properly so that after coming here, you won't be blank, and just be open, be positive, and just snatch the opportunity, whatever comes in your way. That's it. Don't follow the herd mentality. It will gonna take you nowhere. So yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much, guests, for your beautiful insight. It really encouraged, and I hope it will encourage whoever who will watch this. Thank you so much for joining us today. Thank you.